सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रथ यात्रा आने वाला है, इसलिए मैं जगन्नाथ जी का ये वाला पिक्चर ड्रॉ करने वाला हूँ, जो कि आप लोग देख सकते हो बहुत क्यूट है। और ये पिक्चर मुझे मिला है पिंटरेस्ट से, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका डाउनलोड लिंक दे दिया है, आप लोग चाहो तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो इस वीडियो में बेसिकली मैं इसका आउटलाइन ड्राइंग करके आप लोगों को दिखाऊंगा, और ड्राइंग करने के लिए मैं यूज़ करूंगा एक पेंसिल और एक इरेजर। तो इधर जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मैंने इस पिक्चर को कुछ शेप से डिवाइड कर लिया है। तो आपको अगर ड्राइंग करने में परेशानी होता है तो आप लोग इस वाले पिक्चर का यूज़ कर सकते हो, और इस पिक्चर का भी डिफरेंस पिक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। कि मैं बहुत ही हल्के हाथों से पेंसिल को इधर पे यूज़ कर रहा हूँ। मैं पेंसिल पे ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये लाइन मुझे मिटाना पड़ रहा है, तो पहले गलती हो सकता है, इसलिए पहले पेंसिल को हमेशा हल्के हाथों से ही यूज़ करना। और इधर ड्राइंग करने के लिए मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहो तो कोई भी पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। और मैंने इधर पे A4 साइज का पेपर यूज़ किया है, आप चाहो तो कोई भी साइज का पेपर इधर पे यूज़ कर सकते हो। तो आप लोग पहली ड्राइंग का डिटेल्स देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना, पहले ये समझना कि किस जगह क्या कर सकते हैं। भी पहले इधर पे ड्राइंग का डिटेल्स देखे बिना यहाँ पर जो भी शेप जहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, बस रेफरेंस पिक्चर को ऑब्जर्व करके वो शेप वहाँ पर बनाते जा रहा हूँ। फिर धीरे धीरे मैं इस ड्राइंग पे डिटेल्स ऐड करते जाऊँगा। वे आप लोग देखो कि मैं यहाँ पर कैसे ड्राइंग कर रहा हूँ, अच्छे से नोटिस करना, तो आप लोग समझ जाओगे। Swimming with just wishful thinking of my
सो इधर पे देखो कि मेरा ड्राइंग इधर पे कंप्लीट हो चुका है। ये ड्राइंग आप लोगों को कैसा लगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको पूरा कलर करके दिखाऊंगा। सो तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।